ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर क्षमाते जी से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही दूसरी गृह लक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। This is a recording of the advice given by Her Holiness Mataji Nirmala Devi on 15 February 1977 at New Delhi. The subject was Sat Chit Anand. किसी ने भी कलम उठाई, लिख दिया। लिखने वाले जो हैं अधिकतर कुछ ना कुछ मतलब से लिखते हैं। कुछ ना कुछ मतलब होता है, या तो लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे कमाना, कुछ शो ऑफ करना, ये होता है। परमात्मा के असीम कृपा से कुछ बड़े बड़े संत भी हो गए, सेंट्स हो गए, उन्होंने भी कुछ लिख डाला। हालांकि छापा नहीं था बेचारों ने, लेकिन उनको फिर छाप दिया। ऐसे हम कह सकते हैं कि कबीर जी है, गुरु नानक है, रामदास स्वामी है, तुकाराम है, और पहले जमाने में वाल्मीकि जी हो गए, योग वशिष्ठ हो गए, आदि अनेक लोग हो गए। लेकिन उसमें से अब सही कौन और गलत कौन, ये भी पहचानना मुश्किल होगा लोगों को। तीसरे जैसे मार्कंडेय स्वामी हैं, अब आदि शंकराचार्य हैं। हम अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं, ये है वो है, कोई आदि शंकराचार्य को पढ़ता ही नहीं। आदि शंकराचार्य को पढ़ने पर भी कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल माँ के इतने बड़े भगत थे कि बस माँ की स्तुति से और कुछ लिखा ही नहीं। माँ की स्तुति करते, पूरी समय भगवती की स्तुति करते रहे, और कुछ लिखा ही नहीं कि तुम ये करो कि वो करो। का बस माँ की स्तुति करो, काम हो जाए। तो बात सही भी उनका कि कुछ योग सांग से किसी से भी परमात्मा नहीं मिलने वाला, वो तो माँ की कृपा होगी तभी मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग हठ योग कर रहे हैं। अरे हठ योग क्या कर रहे बेटे? हठ योग कई घर गृहस्थी के लोगों के लिए है ये नहीं चीज। अब यहाँ पर कहते कंपलसरी कर दिया। पुलिस वाले कल आए थे, बोल लगे कि हम लोग को हठ योग सिखाए, तो करेला नींद चढ़ा हो जाए। हठ योगी इतने क्रोधी लोग होते हैं कि भगवान बचाएगा, कि बीबियां तो भाग जाती है। कोई भी हठ योगी देखिए, घर में हठ योग आए और बीबी घर से भाग, आदमी डंडा लेके दौड़ने लगता। या अगर बीबी हठ योगी हुई तो भगवान बचाए रखे उस आदमी की हालत खराब, क्योंकि बिल्कुल ही वो मना है।
संसार में करने के लिए ब्रह्मचर्य में गुरु के साथ में 6 चीजें, यम नियम आदि सब कुछ बड़े इसे संभाल के हठ योग करते हैं। अब जिसने हठ योग पढ़ा आके मुझे लेक्चर देने लगता है, माता जी फलानी किताब में लिखा। अरे भाई, उसका लिखने वाला कौन? अब उसमें से कौन आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, कौन से आदमी असल है, कौन से आदमी नकल है? असल में भी 2 चीज होती है। एक ऐसे होते हैं कि जो परमात्मा को अभी खोज ही रहे हैं, और एक होते हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। जो अभी खोज रहे हैं उनको पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि वो अभी खोज रहे हैं। अंधे को अंधा पड़ेगा, फायदा क्या? जिनको मिल गया है उनको पढ़ना है। जैसे कहिए आप नानक जी हैं, कबीरदास जी, पर आप कहें सूरदास जी, तो मैं तो कहूंगी नहीं, सूरदास जी नहीं। सूरदास कविता ठीक लिखते हैं विरह की, वो तो विरहगार है। ये तो मिलन की बात जो करे उसको पढ़ना चाहिए। जो मिलन ही की बात कर सकता है वही असल में आपको बता सकता है मार्ग, क्योंकि उसने रास्ता पा लिया। अब ऐसे ही सबका है। अब आजकल बहुत सारे और निकल आए हैं। अब जैसे आपने जय कृष्णमूर्ति का, वो तो कोई मिलन की बात नहीं करते, वो तो घबराए हुए इंसान है। वो कुछ मालूम नहीं, अंधेरे में टटोल रहे हैं और सबको अपने साथ धमाधम गिरा रहे हैं। और जो उनकी किताबें पढ़ता है वो उन्हीं के जैसा बोलने लग जाता है। अरे बोलने से थोड़ी भगवान होते हैं, तो अंदर से ये होनी चाहिए। घटना है ये सहज में अंदर उपस्थित होती है, तो जिसके कारण हमारी जो चेतना है वो एक नए आयाम में उतरती है, एक नई चीज घटित होती है। जब तक ये घटना नहीं होती है तब तक हम क्या बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति को बक रहे हैं। वो भी एक अंधे और तुम भी एक अंधे, और मैं सुनती रहती हूँ अचंभे से कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये लड़का, कि फलाना है, इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है। पूछा कि किसने बताया? कृष्णमूर्ति। अब कृष्णमूर्ति कोई पार आदमी नहीं है, तो पक्की बात है। अगर पार होते तो ऐसी बातें नहीं करते। पार आदमी जो है अथॉरिटी से बताता है, ये है, ये है, ये है, इसे देखो, कोई भी देखो। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कोई डर नहीं उसको, कह दिया उसने साहब। क्राइस्ट ने कहा आई एम द डोर, आई एम द पाथ, सब उसके खास खास गए। आई एम द लाइट, कोई किसी के बाप का डर नहीं, कह दिया हाँ है। कबीर कैसे कहते हैं, 5 25 पकड़ बुलाऊंगा। क्या हिम्मत की बात, एक ही डोर बंधाऊंगा, मैं करूंगा। ये तो नहीं कि घिघिया रहे भगवान के सामने में, क्या भगवान मुझे मिल, जिसको मिल गया है वो विरह क्यों गाएगा? इसलिए अगर तुमको भाई सबको ही पढ़ना चाहिए तो ये गलत बात है। तुम खोज रहे हो, जिसको मिल गया है उसको पढ़ो। अब जब तुम भी खोज रहे हो और दूसरा भी खोज रहा है, अब जो खोज रहा है उसके पढ़ोगे तो तुम भी उसके साथ गए गड्ढे में। समझ लो उसको वो गड्ढे में है तो तुम भी गए, तुमको क्या मालूम वो ठीक है नहीं। इसलिए जय कृष्णमूर्ति को तुमने जो पढ़ा है, तो जय कृष्णमूर्ति कहीं ये तो नहीं बोलते कि मुझे कुछ मिला है या मुझे कोई अनुभव हुआ है। फिर ऐसे आदमी को पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि वो हमारे जैसा दुखी है और हम भी उसके जैसे दुखी है। सूरदास के भजन इसलिए अच्छे लगते हैं कि हम भी भगवान को खोज रहे हैं और वो भी गी आ रहा है भगवान के लिए कि भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे। और मिलन के गीत कोई गाए तो अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये तो मिलन के गा रहा है और हम तो यहाँ भी यहीं बैठे हुए। ये कृष्णमूर्ति जी जो है ये फंडामेंटल रेवोल्यूशन का भी तो बात करते हैं। बात करते हैं ना, बात तो वो उसने भी, मुझे नहीं पता ये बात। हाँ हाँ, अरे बेटे बात करना दूसरा हुआ, करना दूसरी बात होती है। और बात करते हैं, बात करने से क्या है, तुम भी बात करोगे, बात से बात, बात से बात, बात से बात, इससे तो बहुत कुछ हो गया। बातों का तो जमाना नहीं रहा, अब तो कुछ करने का जमाना आ गया, कुछ देखने का। हमारे लिए तो फिर कुछ पता नहीं लगता ना कि जब तक प्रैक्टिकली कोई नहीं मिले सबको पढ़े ही जाए, पढ़े ही जाए। नहीं नहीं, हम तो कितनी मेहनत कर रहे तुम्हारे ऊपर, कर रहे कि नहीं। तेल भी थोपा तुमको, आप कहो तो तुम्हारी मालिश भी कर देती हूँ। ऐसा है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं नीरक्षीर विचार होना चाहिए। अगर आप कहें हम हर एक चीज करना चाहेंगे माता जी, हमको हर एक चीज करनी है, तो भाई करो, माँ कैसे रोकेगी, करो, तुमको करना है तो करो। अब सबको थोड़ी नाम कहेंगे कि नहीं, लेकिन परमात्मा एक ही चीज है और उसका पाना भी एक ही है, और उसको पाना यही एक काम है, बाकी कुछ काम नहीं, सब व्यर्थ है। ये सही बात है। बाकी सब करना हो तो करते रहो, अब इस जन्म में करोगे अगले जन्म में करोगे, पर ये इसको पाने का कब करो। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम एक ही कहेंगे कि बस इसी को करो और इसी को पाओ, बाकी सब हमसे कोई मतलब। अच्छा, और दूसरा करने से अगर कोई भी लाभ होता हो तो हम कहेंगे जरूर करो बेटे, लेकिन नहीं होता, उससे नुकसान हो गया।
अभी देखो तुम 3 दिन से मेहनत करो, तुम्हारे सामने कितने लोग पार हो गए, तुम नहीं हुए हो, है ना बात? सच्ची बात है। अब तुमसे मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन नहीं घटी तो अच्छा, तुमको पहले दिन तो तुम हो गए थे और फिर तुम पकड़ गए। मेरा भी यही हालत है। तुम्हारी भी हालत है। इसकी वजह है क्योंकि तुम लोगों ने सब पढ़ा है, वो तुम्हारे खोपड़ी में बैठे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ उनको भूत कहती हूँ। भूत जरा साफ कर दीजिए। साफ मैं कर दूंगी, तुम रास्ता बदल के जाना। मैं तो यहाँ तक कि कपड़े बदलवा के भेज हाँ, दूँ। मैं बदल लूंगा। हाँ ठीक है, आज साफ कर दूंगी, कोई बात नहीं। असल में क्या बताएं, मिथ्या जो होता है बड़े जल्दी चिपक जाता है बेटे, सत्य नहीं चिपकता। सत्य बहुत वर्ण करना पड़ता है, सत्य की अपनी प्रतिष्ठा है। मच्छर आपके पीछे दौड़ेंगे जहां भी आप जाएंगे, क्योंकि उनको आपका खून पीना होता है। और किसी राजा के घर जाना होता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसका प्रोटोकॉल होता है, असली कपड़े बनाने पड़ते हैं, टाइम लेना पड़ता है, बड़े शान से जाना पड़ता है वहां पर, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। ऐसी सत्य है जो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी सत्य की अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि उसके आगे अपने को सर झुकाना पड़ता है। अगर हम अपने अकड़ में बैठे रहें तो सत्य आपका वर्ण नहीं करने वाला, आपको सत्य को वर्ण करना पड़ता है। लेकिन मिथ्या आपको चिपक जाएगा, आप यहाँ पर अभी पाए हैं, वहां जाएंगे पकड़ जाएगा। ऐसा होता है, मिथ्या इतने जल्दी चिपकता है, कुछ पूछिए। जैसे कि कोई मिट्टी हो, सफाई नहीं जल्दी से होती, लेकिन मिट्टी बड़े जल्दी से चिपक जाती है। यही बात है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए तुम लोग पकड़ गए, कल फिर पार होके फिर पकड़ गए। पकड़ना चाहिए नहीं, जरा गहराई से जाओ अंदर तो नहीं होता, जरा गहरे उतरो। सहज योग जो है गहरे लोगों के लिए है, उथले पुथले लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ बाह्य से सब चीज को जानते हैं उनके लिए सहज योग नहीं है। अगर तुमको अपना कल्याण करना है तो अपने को गहरा उतारना पड़ता है। हालांकि हम और गुरुओं जैसे तुम लोगों की बड़ी परीक्षा नहीं है, हम कोई तुम लोग को सताते नहीं। और गुरु लोगों को देखो जो रहते हैं, एक अमरनाथ में गुरु थे, अब किस्सा बताएं। अमरनाथ में एक गुरु जी रहते थे, उनके पास एक शिष्य थे, उनके बेचारे जगन्नाथ जी, बाबा जगन्नाथ जी। उनको उन्होंने एक बम्बई के पास जगह है अंबरनाथ, वहां भेजा और उनसे बताया कि तुम 12 साल वहां पे तपस्या करो, 12 साल बाद माता जी स्वयं आएंगी और उनका आज्ञा चक्र पकड़ा था वो निकाल देंगे। अब सोचो, मैं 12 साल बाद उनसे वहां, मैं अंबरनाथ में मेरा प्रोग्राम था, वहां गई तो आए जगन्नाथ जी। उनका माता जी मेरे गुरुजी ने मुझसे ऐसा कहा था और वो खुद भी आए बैठे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं गई वहां तो मैंने उन गुरुजी से कहा कि भाई इसका एक आज्ञा चक्र निकालने का काम है, तो तुमने क्यों नहीं निकाला? तो मेरे से बोलते अब मरने दो। मैंने कहा मरने दो, ये क्यों? तो कहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मेरा आज्ञा चक्र कितने दिन बाद मैंने खोला है, इसको मैं ऐसे क्यों दे दूं? वो कोई प्रेम ही नहीं। फिर उसका आज्ञा चक्र मैंने निकाल दिया। तो कहता फिर पकड़ लेगा ये। तो मैंने कहा क्यों पकड़ेगा? कहले सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा तुम इसे कहते क्यों नहीं कि सिगरेट मत पियो? कहले इसको मरने दो। वो भी कहने में उनको हर्ज है कि उस आदमी से ये न कहा जाए कि भाई तू सिगरेट मत पी। कहते क्यों कहूं, मेरी क्यों मैं कहूं, इसको सीखने दो, खुद इसको खुद सीखना चाहिए। और मैं अगर तुमसे कोई बात करती तो तुम लोग को बुरा लग जाता है। मैं तो तुमको इसलिए कहती हूँ कि ये तुम्हारे धर्म के विरोध में बैठे, ये चीज ठीक नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। अब वो मेरे से कहते हैं, सब लोग हैं बहुत सारे, एक पौंडीचेरी में है, एक कालीकत में है, वो लोग मुझे उल्टा वहां से भेजते हैं कि इन आदमी लोगों के लिए करने से कुछ नहीं। ये जो दुनिया के लोग हैं ये बड़े दुनियादारी वाले हैं, ये आज पाएंगे कल खो जाएंगे, फिर पाएंगे फिर खो जाएंगे, ये जमने वाले हैं। और मुझे दिखाना है कि यही लोग पाएंगे, और पाए हैं। हमारे यहाँ से लोग हैं, बड़े जमे हुए लोग हैं। आपने देखा है कैसे कैसे, ये देखो इंग्लैंड से आए 6-7 लोग ऐसे और है, वहाँ 20-25 आदमी है, कुछ बड़े जमे हुए लोग हैं, पक्के। जमना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। मनुष्य चाहे कि भाई दुकान में जाकर कोई चीज खरीद ले, सो तो बात नहीं है, अपनी बुद्धि को जरा जमाना पड़ता है। और किसके लिए? अपने ही कल्याण के लिए। माता जी का क्या कल्याण होने का, मैं तो कल्याण के परे हूँ। कल्याण तुम्हारा ही होगा, तुम्ही को मिलने वाला है, तुम्हारा ही आनंद है। तो जरा जमना है, थोड़े गहरे हो। कोई ना कोई दोष तो जरूर है ही। बहुत से लोग पार भी हो जाते हैं, फिर डगर डगर उनकी नाव चलती नहीं जमती। अब मैंने उनसे कहा था कुछ लोगों से कि भाई
पार होने के बाद एक फोटो का ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं कि हमारा फोटो है, उससे वाइब्रेशंस आते हैं, उसके सामने हाथ रखो और 2 पैर पानी में डाल करके दोनों पैर नमक छो। ये करो 7 दिन तो तुम्हारा काफी जम जाएगा मामला, क्योंकि थोड़ी श्रद्धा भी बढ़ती है, वाइब्रेशंस आते हैं और पैर में से वो सारी गंदगी है निकलती जाती है, क्योंकि दुनिया में रोज ही चीजों से आप मिलते रहते हैं। एक और है, वो गगनगढ़ पे रहते हैं। उन्होंने इन लोगों से बताया कि मैंने जब मेंढक था तब से मैं तपस्या कर रहा था भगवान की, हजारों वर्ष की मैंने तपस्या करी, तब मेरे वाइब्रेशन छूटे। और ये माता जी तुमको वाइब्रेशन इतने जल्दी दे रही है, तुमने क्या किया? सब बेकार हो तुम लोग। माता जी के लिए जान देने वाला तुम्हारे में से कितना है बोलो? अब ये लड़के सिर पिटा गए सब। और ये लोग तो नहीं, पर एक आदमी था बेचारा, उसको मैंने कहा, मुझे बहुत सताता था, मैंने कहा जा तुम महाराज को, उसने कहा था किसी को भेज देना। तो वो 15-20 रोज बाद आया बेचारा, तो दोनों टंगड़ियां गले में डाल करके मेरे पास ले गया। मैंने कहा ये क्या? कह रहे अरे वो महाराजा की तमाशा है। मैंने कहा क्या किया? वो शेर पे घूमते हैं, उनके शेर ने मुझे कल फेंक दिया नीचे में और मेरे को खाने को नहीं दिया, मेरी टंगड़ियां तोड़ दी, 4 दिन भूखा मारा, 5वें दिन 4 रोटियां नीचे करी और उसके बाद बोला कि तेरी टंगड़ियां गले में डाल के माता जी के पास ले जाओ, वही तेरठ को ठीक करेगी, मैं तो तेरे को फिर फेंकूंगा नीचे। बेचारे वहां पहुंच गए। तो थोड़ा सा तुमको भी कोऑपरेट करना चाहिए, तुमको भी समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए, जनसाधारण में घूमते हुए अनेक तरह के बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी चीजें, शक्तियां सब चल रही हैं। 16 राक्षसों ने जन्म लिया है कलयुग में, बड़े वाले राक्षस, जिनको की देवी ने मारा था। मार के भी कोई फायदा नहीं, मारा तो फिर से वापस हाजिर है, सबके सब अपने सारे आयुध लेकर और भी शैतान बन के आए और तुम्हारे साइकी में घुस रहे हैं, दुनिया भर के धंधे बनाए, भगवान बन के आए कुछ, और पैसे वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है तो खरीद ले आप लोग। और पैसा डाला तो कौन क्या बोल सकता है, जब पैसा डाल दिया तो आप बिके। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो रिटायर हो गए, वो उनके सेक्रेटरी थे, वो खरीद ले किसी को भी चाहे, जिसको चाहे खरीद है। राक्षस लोग, पक्का राक्षस है, महाराक्षस है, उनका वर्णन है सारा देवी महात्म्य में, और वही आके बैठे हो अपने खोपड़ी पे और हमको उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी ज्यादा, उनका ढंग अलग, वो आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको मेस्मराइज कर देंगे, सबके सब लोग आप उनके पीछे भागने लग जाएंगे। उनका तो ठीक है, क्योंकि उनको कोई कॉन्शियस नहीं है, उनमें कोई सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, उनको कोई डर नहीं है भगवान का, और नर्क 1000 बार हुआ है, उनको इम्यूनिटी हो गई, कुछ नहीं लगता उनको, क्या किया जाए। नर्क तो भरा पड़ा हुआ है, अभी इनको भी नर्क भेजने से कोई फायदा नहीं। तुम्ही लोगों को अपनी पूरी स्वतंत्रता में सत्य का वर्ण करना पड़ेगा, पूरी स्वतंत्रता। मैं जबरदस्ती कैसे करूं? और से जबरदस्ती से अगर किसी को राजा भी बनाया तो बैठेगा क्या वहां? सहयोग में बहुत सी बातें सुलभ हो गई। जो सहयोग आज जिस दशा में है, सहयोग तो शुरू ही से था, मैं आपको बताऊंगी सहयोग पहले कैसे कैसे था, लेकिन आज जिस दशा में सहयोग है इसमें बहुत बातें सुलभ है, लेकिन एक बात दुर्लभ है, और जो कहना चाहिए कि इसका अंग्रेजी में कहते हैं लूप होल है, वो ये है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के आगे परमात्मा भी झुका हुआ है। इसमें हिप्नोसिस नहीं हो सकता मेरा कोई, मैं आपको किसी भी तरह से कोई चक्कर में डाली नहीं, आपको अपने ही चक्कर में रहना चाहिए, आपको अपने ही विचार में रहना चाहिए, और अपने ही से पूरी इसकी इजाजत लेके, परमिशन ले करके परमात्मा की ओर आना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती ढकेल ही नहीं सकता। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो सहयोग बहुत जल्दी लाभदायी होता है, कि आपकी जो फ्रीडम है रिस्पेक्टेड। Today I am going to tell you, yesterday I told you what are the mental status or what is the totality of man. Whatever I have told you about it, about the totality of man, all his 4 sides, is on top is the super consciousness, on the right hand side is the supra-conscious state, and this side is the subconscious state, and down below is the hell.
You can see that after realization, not before it. Before it, if I tell you that this man is not correct, that man is correct, you are not going to like it. You will think that I am criticizing someone. Why should I criticize? One person I say is good, another person is not good. Later on, once you are realized and you have gone deep into it, then you become so sensitive that even the name of such a person gives you a heat in the hand. You start burning. You don't like it. So this strata of super consciousness, I told you, I will be discussing today, because yesterday we discussed the two words. Now you might say that we must do even the collective subconscious and also this collective supraconscious, we should try to do everything. But you are sidetracked. Not only, but you are affected. You are hurt. But the worst part of the whole thing is that after human state, if you go to any one of these states, you go to the Pishacha state. On the left hand side you become a Pishacha, on the right hand side you become a Rakshasa. Even after realization, a person like Ravana became a Rakshasa. He was a realized soul. He was a Brahmin, no doubt. He was. But even after that, you see, he had such a weakness for women. When he tried to do that again, he fell down. He became a Rakshasa. The trouble is, after this state, you become either a Superman or what you call the Devata, or you can say the realized soul, or you become a Rakshasa. So you have to choose. Now human state is such a state that either you go this way, that way, or you go to hell. And when you go to the extremes, you come down to hell. Supposing you have been to somebody who has been a tantrika. Take the case of a tantrika. He has been trying, you see, all these things and all that. Unknowingly. Also he does not know he is a tantrika, supposing you have been to him. You come to me, immediately we find out that there has been a problem with you. If you go to a realized soul, immediately I will know that he has been. Today one gentleman came to me. I asked him, who is your guru? And he told me his name. He is a realized soul, I know. In Kanchi, the Shankaracharya of Kanchi, the old one, is a realized soul, not the new one. New one is not. None of them are, except for one, the Kanchi one. When he told me, I said, you will get your realization, no problem, because you see, if he is a realized soul, they will have no complication. He got his realization, he was all right in no time. So no question. But if you go to say somebody else who is a tantrika, bend your head before that. You can't get your realization. Now there is nothing to criticize. Why should I? I'm not a politician. I don't want anything. I don't want any money. Nothing. I don't have to know even about Kundalini. I know each and everything about it. Absolutely complete. I don't have to have anything from you. Then why should I say that this man is not alright? Because I can, even a child can say. If a child is realized, he will say. My granddaughter, she went in Ladakh to see some Lama. They went to Ladakh and she saw the Lamas. These Lamas are, none of them are realized. Surprisingly, none of them are realized. It's a fact, I'm telling you. If they were realized, I would have said they are realized, but if they are not, I will say they are not. Pope is not a realized person. But this is not politics. This is absolute truth. So this little girl, she was hardly that time 3 or 4 years of age. So she looked at him, she said, ये क्या सर मुंडा के चोगा पिना के ऐसे बन के बैठे हैं, गरम कहीं के. Immediately she said it because she could feel it. She's a child. We had once a program, and another granddaughter of mine, she had come. And a big Sadhu Baba in Bombay, I will not name him because you all know him. He's not a Guruji, but he's running a big mission there. He was sitting on the dais. And this, my granddaughter, was sitting with someone in front. She's a small girl, very small. Now she's hardly 5.5. That time she might be about 4.5 or so.
She saw from there, this gentleman sitting there. They had called me as the chief guest and he was the chairman or something like that. No, I don't know chairman, but he was something, I don't know. So she saw from there, she says, Nani, ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ बाहर, इसे तो सब गरम गरम आ रहा है. वहां से चिल्ला रही. It was so embarrassing. She said, इसको भगाओ, ये मैक्सी पहन के जो बैठा है मैक्सी. अब आप कहेंगे कि साहब इतने बड़े साधु बाबा है और उनका ऐसा वो है ये नहीं, झूठ मूठ के अपने सर मुड़ा के बैठे हैं. कबीर ने कहा है कि सर मुड़ाने से क्या होता है, मन को मूड़ो. चोगा पहनने से क्या होता है, अंदर का चोगा बदलो. अच्छा, इन सबको तो हमने बांध के रख दिया, फिर कोई चोगा वाला आ गया उसके पैर पे क्यों आने का. मेरे भाई साहब है यहाँ एमपी, उनके साहबजादे हैं, वो भी पार पैदा हुआ है, काफी बड़े उम्र उनकी, काफी बड़ा ब्रिलियंट लड़का है. उसका रात दिन अपने माँ बाप से झगड़ा, जो चोगे वाला है उसके पैर पे क्यों जाते, जो चोगे वाला है उसके पैर पे क्यों जाते. वो कहते भाई हमें डर लगता है, वो हमारा कुछ खराब. डर क्यों लगता है तुम्हारा, अगर भगवान पे विश्वास, तुमको डर क्यों लगता है, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, तुम क्यों जाते हो. अब कोई उनसे पूछे तो ये लोग कहते ये बड़ा ऑब्स्टिनेट है. मैंने कहा ऑब्स्टिनेट नहीं है, उसको दिखाई दे रहा तो ही इज टेलिंग यू द ट्रूथ. व्हाई डू यू कॉल हिम ऑब्स्टिनेट, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, वेरी ब्रिलियंट. वो कहते इस मामले में ही सो पर्टिकुलर. एंड वन डे ही वाज सेइंग दैट अब कोई आएगा तो उसको डंडे से मार के भगाऊंगा. इस घर में सब लोग पैसे लेने चले आते हैं मेरे बाप से. She can't bear it. One father came to see my brother, and my brother was about to touch his feet. He said, if you had touched it, otherwise I would have hit the father very nicely. Why should you touch his feet? So you see, the thing is, it is an absolute knowledge. It is a knowledge by which you know what is the truth, what is not the truth. We people having limited consciousness. Anybody talks about wisdom, this is a case of figure among people. I know, that is the reason why I am so sorry. You see, why my attitude is very different from these gurus is, I don't say that you spoil yourself, go to this one, all right, die there. You see, I don't say like that. I am looking after you because I know you are seekers. And I feel sorry because the seekers are suffering. I feel very sorry. Now the hippies abroad. You see, my center is just in the center of the hippie village. Why? Because I know they are the seekers. Poor things, they are suffering because they are the seekers. See, all my sympathies, all my heart goes to them because they are the seekers. You know how much I am working with you, know that very well. Because I realize that you are a seeker. And in your ignorance you have gone to these people. Now you can say that why didn't God give us this sensitivity? God had. God had given you. Human beings were very sensitive at the time of Sita. At the time of Radhaji also they were very sensitive. But now you see the man in his freedom has become so materialistic. What impresses is a good dress. Good features, big car, somebody coming in a big car, oh big thing. We are becoming day by day very gross. This is the reason. And this grossness has grown into us, you see. That's why I do not feel it. But there are many people, I tell you, who could not bear J. Krishnamurti. They said, oh, he is seeking. What are we to get from him? It is simple, you see. Use your brains. Either use your sensitivity of your heart or use your brains. God has given you brains. If you read J. Krishnamurti, he is seeking. It's very easy to find out the one who is seeking and the one who is not seeking. Yesterday that singer was singing all the Biraha songs. When he got realized, I said, now don't sing Biraha. Now you've got it. But still he goes on Biraha, so God will say, all right, let him not have his vibration. So you lose your vibration. In small things, I've seen people lose their vibration. Such a precious thing has been brought down to them. And for a small thing, they lose it. There was a man who got realization. And he went somewhere, Kashi or someplace. From there he bought some black thread and he was wearing. Now see the human mind. You say that we are. But this is stupidity. He gave that black thread to him.
Now what is a black thread, you tell me? What is the worth of a black thread? He lost his vibration. When he came to me, I said, my son, throw away this black thread. He cannot throw. He said, no, I cannot throw black thread. I said, now what to do? I said, who has given you this black thread? Use your brains. I spent 1 hour discussing with him, then he threw the black thread. I said, this man has taken for this one small little thing 5 rupees from you. You must know that this man is making money. His bad vibrations are gone. And why are you attached to it? Now do you know why he is attached? Because he is possessed by that. What is there in a black thread? You tell me. And he is an educated man, huh? He is not a foolish man. That thread he could not throw. शुरू हुआ? Now you know. मिथ्या has to be given up. शुरू हो गया? ये बात. यहाँ से आप सबके छूटेगा. है? You see, you are attached to these small things of life and not to the eternal things. That's why you lose it. I don't ask you to sacrifice anything. I don't even ask you to throw away anything. I don't say that you give up anything. There are people who smoke, drink. I don't even say that. Because I know even if I say that, they'll run away. I know that. Human beings are like that. You see, I please you, I plead, I chastise, I chide you. I do everything. But you must know one thing, that I want that you should stick on to reality. I will not allow you to have falsehood within you. There are methods that a mother employs. There was a great smoker, you see, who came to me. And he told me, I cannot give up smoking, that's why I can't come to Sahajog. I said, no, you don't give up smoking, you can come to me. There's no need for you to give up Sahajog. He came. And you know what happened? A lot of smoke started coming from his nose and mouth and things. Started getting the fragrance of udbatti. He said, what's this happening? I said, all your smoke is coming back. Now whenever he smoked, he used to get that fragrance of udbatti, he gave up. So I play some tricks also to help you. But it's for your good only. If it is for your hita, for your kalyana, you should not mind. There was a question. People said that it is said that say the truth and also it should be pleasing. Priyam. How can you say Satyam and Priyam together? Because if you say some Satya, people don't like it. It is not Priyakar. Because supposing I say you give up this habit of yours, then you don't like it. But that is a fact. If I say you don't do this job, it's not a good job, you should not do it. So you don't like it. So what to do? So Krishna has found out. He says that you tell them the hitam. Hitam is in between. Whatever is hita for your Atma must be told. So though it may not be priya just now, after some time it becomes priya. Because he realizes what I have got out of it. Of course I don't want to lose any one of you. I do not want you to lose your vibrations in any way. Never. How can I want it? I want you to have. But you must know what your mind is up to. There is some sort of an obsession. See the human mind, how it works. Then he showed me a photograph. I told me I will not tell you. I was telling I will not tell you. He was after my life. You tell me what is this, what happened to me. I had become like this for 3 days. I went into trance, I had these things. No, I didn't want to tell him because I know it would upset him. So I gave it to one of these Sahajogis. I said, you see, they started burning their hands. They gave him back. Still he was after my life. You must tell me, you must tell me. I tell him. I told him you were possessed. He was so angry with me. He was telling this is not Kundalini, this can be anything. You can see the Kundalini rising, you can see the breathing of it, you can see the rising of it, you can see the acting of it, you can see the people who know about it, who know about collective consciousness. But he got angry with me for that, he went away. Now what am I to do? You see yourself in this. This is the Darpana I am showing. There was another fellow who came, you have seen that, Hatha Yogi. He was a police wala.
So I told him, you have read Patanjala? He said, yes. I said, in Patanjala it is read, said that it is not meant for householders, it is meant for sannyasis who are sitting in the jungles with a guru. It's yama, niyama, brahmacharya and everything. He said, yes, it's true. There are 8 things to be done. I said, are you doing 8 things? He said, no. What is your relationship with your wife? She's run away. Then I become very hot-tempered. Even my guru is a big hot-tempered man. Now you are teaching this to police people? God save us. Oh God, they will have no heart left, because if you do Hatha Yoga, the heart becomes just like this. You have seen Durvasa, that horrible fellow Vishwamitra. You want to become that? They had no love for anyone. I have seen all these. I must say, these Hatha Yogis, I wish they marry, all of them. Those who are sitting in the jungle, who are realized souls. See, they have no heart, they have no feeling. I have told you what is their feeling. They have no karuna within themselves. They just say, you are a mother, so you have the karuna. But what about all the great saints? They had karuna, they were married people. All the Hatha Yogis, if you find anybody who is doing Hatha Yoga, whether wife or a husband, they can never live with this. Because all the chakras are spoiled, no brahmacharya is there. क्या बात? कल सवेरे आओ, इस टाइम में भाषण है, सवेरे ट्रीटमेंट करने का. अच्छा, सवेरे के टाइम. क्या बात है? क्यों कर रही हो शुक्रवार का व्रत? बंद करो. व्रत करना किसने बताया तुमको? ये सिनेमा देख देखे अब सिनेमा वाले धर्म सिखाने लगे. बिल्कुल नहीं करने का. तभी ये हुआ है. और करोगी व्रत तो और भाग जाएगा. 3 महीने का छोड़ के भाग गया. अच्छा, पहले तुम्हें अभी कान पकड़ो और कहो मैं कभी व्रत नहीं करूंगी. छोड़ो, कभी उसको बुलाती हूँ वापस. कभी व्रत नहीं करने का क्या जरूरत? शुक्रवार के दिन व्रत करना किसने बताया? अभी सिनेमा में होने लग गया. अरे बाबा रे बाबा, मैं कहती हूँ अभी रिलीजन पहले तो सिनेमा में होता था, अखबारों में से बांटो. अच्छा, उनका फोटो कर ले आना. नहीं है फोटो. अच्छा, जरा उनका नाम दिखा दो इनके पास. अच्छा, सब नाम लिखा दो, मैं उसको कल ठीक करूँ. तुम कल आओगी? सवेरे आओ, कल आराम से देखते करेंगे सब काम. अच्छा, एक बार कल आ जाना. और अभी व्रत किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं भी. व्रत क्या करने का? किसने बताया भूखे मरने के लिए? भगवान ने सब खाना पीना के व्रत के लिए बनाया है. कभी नहीं करने का व्रत. अच्छा बना रखा है, व्रत करो, अपनी जान को मारो. अरे व्रत करने से कुछ नहीं होता है. अपने यहाँ तो वैसे ही लोग भूखे मर रहे हैं. व्रत क्या करने का? जितने भूखे मर रहे हैं सबको भगवान खिलाए क्या? ये सब ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए बनाया है कि तुम लोग व्रत करो, खाने को हमको दो. उस दिन हुआ था, उस दिन भी मैंने व्रत रखा. जरूरी का व्रत आया था. उस दिन भी मैंने कहा चलो बच्चों की सुधी बती ठीक हो. बच्चों की भगवान ने पता नहीं क्या, बच्चे लड़का है 12 साल का, उसकी सुधी ऐसी हो रही है, पागल सा रहता है, सारे शरीर में खुजली हो गई है. हे बघा, हिला सांगा, हिला बाधा आहे, ते आणायला सांगा काय असेल ते. जाओ, वो बताएंगे तुमको. कोण आहे मग दवड़े? हिला समझाऊन सांगा. जाओ. मेहरबानी से कोई व्रत नहीं करे, सब भूतों का मामला है. कल ही मैंने बताया था व्रत नहीं करो करके. अच्छा बेटी चलो जाओ, वो बता रहे तुमको क्या करने का है. व्रत करके भूत अंदर आते हैं. जैसे ही कमजोर हो जाता है आदमी वैसे भूत पकड़ लेते हैं. व्रत किससे करने का है? सब गलत सलत बातें बता के रखी हुई है. जाओ, वो बताएंगे तुमको क्या करने का. अच्छा, हाँ. For what, बेटे? Regarding this Kundalini only. हाँ. Regarding this Kundalini only. I have got some personal problems. I would like to discuss with you. Tomorrow, day after. Half an hour's time or 15 minutes. Why don't you have some problem about Kundalini yoga? What I have some doubts. I want to clarify. doubts? First of all, did you get your realization? No, it's not the question of getting realization. हाँ. But I was doing something. I would like to talk to you about it. You have been doing something तो गलत हो ही गया. I have given it up. Given it up, don't you worry. We'll see now. Supposing, you see what I am saying. He didn't sort of agree with me. Alright, so it's a good thing. You just sit down, just now we'll see. If you get your realization, well and good. No problem, forget it.
If you do not get, supposing there is a problem in you already existing, they will immediately know on your chakras. इसमें डिस्कस करने का क्या है? डिस्कस से तो कुछ होने नहीं वाला ना, वो तो होना पड़ता भी। देखो इसको, देखो हो गया, फिर गिर गई। ये तो उनका कमाल है कृष्णमूर्ति का। एक वो गुलवणी महाराज एक नमूना है। और जाओ उनके पास, और सब लोग बोलते कि माता जी आप क्यों मना करते हैं, सब होने दीजिए। अरे सब होने दीजिए, मैंने कुंडली नहीं गिर जाती ना। देखिए भाई साहब, आप देखिए, ये देखिए अभी कमाल, यहाँ पे कुंडली नहीं आती। नो नो, see the kundalini comes up and falls down. So what am I to do now? आया, देखो ये सभी लोग ऐसा करते हैं। आपके चक्र इतने खराब कर दिए कि कुंडलिनी ठहरती नहीं, नीचे गिर जाती। अभी आप बोलते कि सब करो, अब सब कैसे करो? जहर भी खाओ क्या? अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, दिखते हैं, बांधेंगे। वो गुलवणी महाराज एक हमारे वहां थे महाराष्ट्र में, उन्होंने सबकी ऐसी कुंडलिनी खराब करके रखी है, रहते थे कुछ पूछो। उसका अधिकारी होना चाहिए, उसका सब आना चाहिए। हमारा तो पैर पे आपको हम दिखा दे, कुंडलिनी का स्पंदन दिखा दे, उसका चढ़ना दिखा दे। कोई डॉक्टर हो तो आप स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं उसका चढ़ना उतरना। जिसको लाभ हुआ वो जानते हैं कैसे पढ़ना था। जो पार हुए वो हो गए, जिनको हुआ है उनको हो गया। अब उसमें शंका करने से क्या फायदा? होना चाहिए ना। अच्छा हाथ ऐसे। तो आज मैं बताने वाली थी आपसे उस तत्व के बारे में जो अक्षर है, जिसको सच्चित आनंद के नाम से लोग जानते हैं। वो तत्व जो हमारे हृदय में एक दीप जैसे प्रस्फुटित है, जो हर समय स्फुरित रहता है, जो हमारे हरेक काम काज, हमारा हरेक चढ़ना उतरना, हमारी हरेक लालसा, हमारी वासनाएं और हमारे प्रयत्न, हमारी इच्छाएं, हर चीज का साक्षी है। उसका वास हमारे हृदय में रहता है। वो तत्व कुंडलिनी के साथ ही साथ हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जैसे ही कुंडलिनी हमारे, जैसे मैंने आपसे बताया था कि त्रिकोणाकार सर के जो शिखर है वहां से अंदर आ जाती है और आकर के 3.5 कुंडलों में अपने त्रिकोणाकार अस्थि में प्रतिष्ठित हो जाती है। सबको समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी या ऐसा कुछ मतलब है? कुछ चित्त जरा विचलित है। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ये बड़ी कठिन मैं बोल रही हूँ हिंदी, जरा जरूरत से ज्यादा है क्या? ठीक है, सबके समझ में आ रही? हाँ, कांट फॉलो? हाँ, so that will be too much. If I say in English, will you all follow? Yes. हिंदी सीखना चाहिए बेटे, जरूरी है। इसलिए एक बात तुमसे बताओ, अंग्रेजी के विरोध में मैं नहीं हूँ, वो तो इंटरनेशनल वगैरह छपती, लेकिन आत्मा की भाषा तो संस्कृत है बेटा, इसमें कोई शंका। आत्मा के ऊपर इन लोगों ने ध्यान कब दिया? कभी नहीं। They have never bothered about the spirit. You see, so we have to use some common language which speaks about Atma. English language is not sufficient enough, I must tell you. They do not have those experiences because, you see, so far they have not gone deep into it. And we are very old people, ancient people.
our culture has been to know God, and everything has come in Sanskrit, because Sanskrit is really a Devavani. Apart from that, when the Kundalini moves, she makes sounds. She makes different sounds, they are really Devanagari sounds. All of them are. On all different chakras they are. If I have time, I will tell you all those sounds that it makes. So our Sanskrit is really a Devavani, and even when you say mantras, then through the Sanskrit language or Devanagari pronunciations only, you can excite them better. Try to learn, if not Sanskrit, at least Hindi, because it's a more sort of a simpler language, and it being a phonetic language, you see, it has a sound, and that sound gives that vibratory effect. You try to learn it. Hindi is not my mother tongue. My mother tongue is Marathi. I speak Hindi because, after all, I know the importance of Hindi. I also know a little bit of English, and I speak in English also. So, it is better to know at least Hindi. It's not much when we can know a foreign language. We can know our own one national language. There's no harm in it. I mean, this I do not want to make it a political stuff, but what I'm saying that for conveying our Marathi is all right for me, Bangla is all right. I don't know much of Tamil or Telugu, but Telugu also, Tamil also, you can, because you see, we are people in this Yoga Bhumi. This is a Yoga Bhumi. This is a great country of yoga. You don't know every particle of this Bhumi. You will be surprised, is vibrating. You see, these scientists and all that cannot understand this. When we start accepting all that the West is saying, we are going to lose all that we had, which is so great. Of course, that is not going to be lost, but the thing is that we are not going to utilize it for our purpose. We have to close all that on one side, and we'll have to accept something which is just a foreign alien thing, and nothing so much comprehensive. You can say it is not samak. It doesn't envelop everything. So English language is all right, I can speak and I can talk to you and explain, but I would request you that little bit of Hindi language, if you learn, it's a good thing, because I find it very difficult. You know, there's one speech of mine they have written in English, and that was translated in Marathi, and what a tremendous thing it was. And in English, I think it's a poor show, absolute poor show. Maybe my English is very poor, maybe that. I don't know, but maybe that. So, we were talking about Sat Chit Anand. Again, I have to use Sanskrit words. See now, what can I do? Sat Chit Anand is the super consciousness, the all-pervading power. Chit is attention, the consciousness. Conscious. You are just now conscious, listening to me. Every moment you are conscious. But every moment is becoming dead into the past. Every moment coming from the future to the present. But you are conscious at this moment, listening to it. A thought rises like this and falls. You can see the rising of the thought, but not the falling of the thought. In between the thoughts, there is a space, which in Sanskrit we call it as vilamba. Of course, in English language there isn't, because they haven't found it out. So there is a vilamba. And in that vilamba, if you can stop, then you get to the conscious mind, and there exists the Sat Chit Anand. Sat Chit Anand is the condition of mind, you can say, or is the state of mind where there is no thought but you are aware. First, there is no thought, nirvichar, but you are aware. That is the first state where you jump into the superconscious. So some people may think that by realization you must achieve something as Adi Shankaracharya had. It's not possible. With some it may be, with very few, but not with everyone. First state is nirvichar. You become
thoughtlessly aware. That's just the first stage. That happens when the Kundalini rises above the Agya Chakra, means enters into the limbic area. At that time, your attention just touches the Sat point. The Sat. The reality separates from Mithya. You are separated. You become two personalities. At that stage, you start separating. Like in the milk, when you put yogurt, or you can say if you put lime, it starts separating into water and the curd. In the same way, the beginning starts. The beginning. This is the state where you can say the Kundalini has been awakened only. We must understand the different stages as it happens. I am giving you a very slow picture. But normally the Kundalini shoots off in most of the people. But in some people it does not. It takes time. It is lost in the Swadhisthana. It is lost into the Nabhi. It doesn't go much higher. It is arrested by Hridaya Chakra, or maybe it may not even rise at all. But in case it crosses this door of Agya Chakra, then you get into the state of thoughtless aware. With thoughtless awareness, as like whatever state you get, supposing you become a governor, so you get a certain power. With that, you get certain powers. But at this stage, to leave the Kundalini is not a good thing. Because the Kundalini can at that stage start moving this side and that side, can possibly, so can go to the supraconscious or can go to the subconscious, collective subconscious. The siddhis people get mostly at this stage. Some of the, not the Shudra siddhis, but the higher siddhis, like you see, they can predict. They can say this is going to happen if the Kundalini has moved to the supraconscious. If the Kundalini has moved to the collective subconscious, then they can start seeing things. You see, a person who is like that, he comes to me, he can see who I was in my previous life. I do not have to convince them. This is the same thing as anybody who is possessed gets. A person who takes drugs, supposing he is a real alcoholic of the last word, and is a good soul, he is still seeking God. Such a person can see me in a different form. He can see my past. He can be very much enamored by me. He would know that I was, because you see, people think the past is greater than the present always. Because the past has been much greater than today's, though I have never given realization to anyone previously. But it was a great past, because human beings are like that. So, he gets enamored when he sees things like that. This happens with people who are on the supraconscious level if they move out. If they move out, this happens to people if they move out onto the left-hand side, that is into the past. Those who move out on the right-hand side can see me as light. They see light. They see all the 5 elements. They can see me as a waterfall or an iceberg. They start seeing the tanmatra. Now again the Sanskrit word means a casual, we can say the causal essence of the elements. It may help them to get convinced, because such a person gets convinced about me, no doubt. Such a person is much more convinced than you are. Now there are so many tantrikas who know who I was, they are afraid of me, they talk about me, they tell about me. There was an ordinary maid servant who came to my program and she got into this.
She started speaking Sanskrit and she described me completely, 15 shlokas she said. First time I never said anything about myself. That's how it started. So at that stage, I would not like to leave your Kundalini, because you can cure people. Curative can be done with your Kundalini, is even in the limbic area. I am very anxious always that it should come out of the Brahmarandha. At that stage, you start getting the vibration. But at this stage, you are just a chitta only, and you just touch Sat point. Your attention is only charmed by the spirit. Only the attention part. Spirit, as I told you, is like a flicker of light in a gas lamp. And Kundalini is like a gas which touches the spirit, and the light of the spirit spreads in the central nervous system. But only the chitta part, the outer core is the chitta, means the attention part. At that stage, when the Kundalini opens the Brahmarandra, at that time what you feel is the vibrations from your hand, and you can feel the another person also, because you become collectively conscious. Collectively conscious only. Again, out of the Sat Chit Ananda, you just touch the Chitta person. So you start feeling the Chitta of your Chitta becoming the Chitta of the collective consciousness. Means you drop into the ocean of Sat Chit, in which you feel consciousness. You can feel another. Yesterday there was another scene, that with intelligence and all suspend, don't know about this thing. He said, I'm in a Surya, in another 35 years, another person. Then I said, how going to, that means this. The Kundalini. Now you have confused, say the language, English, this is just touching, that is seeing the, because feel not that you of another, praise of another, gives an revive has to be. To just feel no thought, but at the how their promise. We are people that. Anand, so the you come is the conscious study, that nothing flows. Then you said it's I am I, you're like, still gone under, still, but Mama feels it. Conscious can give the tool. So, feel of and all here of the kidney, but as a sitting, you can. We continue for down here. Listen, so your come, you drop and motion of the if people at ocean, but they're putting down and we got a bird. This is how it's very proper. And all that. Nothing he cannot think. That's it. Never say I the language. You don't, it keeps coming up. Even allows mother like this little man feel Kundalini. To his says that who is from to him. But then he's out of further cancer. The doctor not diagnose do what the thing and left or now from how the child to me, but it is acting from there. This is a children surrender. Become there. Anything of his which is which is Guru. He doesn't turn on that is like that. Very big is so great. The man is not accepted that might get running. But if anything, then you start. But it can and if I so we it happened in the hospital. I mean it have been for it was a Hana. Then soul is on the road in which you have to break road. And the miss is get with the yes, he is attending for a scientist. What are his own? As you can what parts self then you not have self. And what happened? It is and even later on goes in it. Now I won't. And she again she is like a third yourself. Identify with you. It people how they any part which you and you will other realize it. More of there is my soul. There and the hotel. Okay, realize if and the other I said, why did you join? And there was I said and later so join also. So the thing which mean to conscious what here in you become because there are many of you
previous life. Then you can my movement. Seeing your Devi Buddha. Be Praman. Better go before you are somebody and you it so start. Second you become you are. First of all, there is that if another way so logical people about still but so very so then you become opposing your rate of get up and so you off set. Are you saying you are set gets really Bombay at least but and then it will be just such understanding and the pick up understanding and training how you maintain you take it you it can you permit that in the music to other in order you higher oh person who problem are about it that you start this stage that you get you that vision such gradual things enter it out they live in nothing they have no rules so there are key forms such so are going learn and somebody that and he and how get the nation you can there is no answer if he's living with mispeople because they what done is one check ability that not take holy goes is that